या हाय, लास्ट क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लिया था। जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट वर्सेस बूस्टिंग। रैंडम फॉरेस्ट में हमने देखा था कि एक बैगिंग मेथड था, दिस इज ए बैगिंग मेथड, राइट। और बूस्टिंग क्या है? सीक्वेंशियल है, ठीक है। बोथ आर एंसेंबल टेक्निक्स, और डिफरेंस यही था कि रैंडम फॉरेस्ट जो है वो पैरेलली होता है और बूस्टिंग आपका सीक्वेंशियली होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन टेबल दे दिया था। देन वी हैव डिस्कस, ये एक डायग्राम है, लाइक रैंडम फॉरेस्ट कैसे आपका ट्री ट्रीज, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, they are being executed, and on the basis of majority vote we have selected the final output. ये था आपका बेगिंग, राइट। बूस्टिंग में हमने क्या किया? मॉडल वन का जो एरर है मॉडल टू में इसको करेक्ट किया, मॉडल थ्री में और इम्प्रूव किया, अल्टीमेटली विल गेट द फाइनल स्ट्रॉन्ग मॉडल, ठीक है। सो रैंडम फॉरेस्ट क्या करते हैं? इट रिड्यूसेस वेरिएंस बाय एवरेजिंग मल्टीपल ट्रीज। और बूस्टिंग क्या करते हैं? बूस्टिंग रिड्यूसेस बायस। और ये वेरिएंस क्या है, बायस क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, राइट। देन नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर हायरार्किकल क्लस्टरिंग, राइट। क्लस्टरिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। So hierarchical clustering means what? This is an unsupervised machine learning technique used to group similar data points into cluster. And it builds a hierarchy. That is, hierarchy मतलब क्या होता है? It builds a tree-like structure of the clusters, and that we call is what? A dendrogram. क्या बोलते हैं? ये जो tree-like structure हम बनाते हैं उसको बोलते हैं हम dendrogram, right? और इसका दो टाइप है। फर्स्ट, agglomerative. Agglomerative is the bottom up approach, and next is the divisive approach. एग्लोमरेटिव क्या है? बॉटम अप, बॉटम से ऊपर जाते हैं हम, राइट। और जो डिविजिव है, डिविजिव टॉप डाउन अप्रोच है, राइट। डिविजिव इज ए टॉप डाउन अप्रोच। और सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं बॉटम अप, दैट इज एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। इसका आइडिया क्या है? स्टार्ट विथ ईच डाटा पॉइंट एज इट्स ओन क्लस्टर, merge cluster step by step based on the similarity, right? And continue until all the points form one, all points form one cluster. तो हम हर एक डाटा पॉइंट को, ये हम एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में हम हर एक डाटा पॉइंट को एक क्लस्टर मान के जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? क्लस्टर्स को मार्च करते हैं स्टेप बाय स्टेप बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के हिसाब से हम उसको मार्च करते हैं। ये कंटिन्यू करते हैं अंटिल ऑल पॉइंट्स फॉर्म वन क्लस्टर, सारे पॉइंट एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे। अब लिंकेज क्या है? लिंकेज डिफाइंस हाउ डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स इज कैलकुलेटेड। दो क्लस्टर के बीच जो डिस्टेंस है, राइट, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो होता है आपका लिंकेज। और लिंकेज दो हैं, देयर आर टू डिफरेंट लिंकेज टेक्निक्स और मेथड्स, single linkage and complete linkage. Single linkage clustering means distance between two clusters is equal to, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, note down this, in single linkage distance between two clusters is equal to minimum distance between any two points. Then formula क्या हो जाएगा? Distance of AB is equal to minimum distance between X belongs to A and Y belongs to B. ए क्लस्टर का एक ले लिया पॉइंट एक्स, बी क्लस्टर का एक पॉइंट ले लिया वाई। इन दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो क्लस्टर मार्च बेस्ड ऑन द क्लोजेस्ट पॉइंट, ठीक है। एंड इवन a single nearby point can connect two clusters, ये हो सकता है। अब इसका प्रॉब्लम, चेनिंग इफेक्ट, ये सभी पूछते हैं इंटरव्यू में। सिंगल लिंकेज ऑफन क्रिएट्स लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर्स।
ये जो दो क्लोज पॉइंट्स है उसको हम मार्क करते हुए जाते हैं, राइट। ये पॉइंट्स आर अरेंज्ड लाइक ए चेन, तो ए बी सी डी ई, दैट सिंगल लिस्ट लिंकेज विल मार्च देम इनटू वन long clusters, even the groups are different, right? If points are arranged in a chain, then ये आपका सिंगल लिंकेज सबको एक क्लस्टर में रख देंगे, ठीक है। बल्कि इनका ग्रुप अलग भी हो बट इसको एक क्लस्टर में रख देंगे। विजुअल इंटेंशन इस टाइप का होगा कुछ, ठीक है। लुक्स लाइक वन लॉन्ग चेन इंस्टेड ऑफ सेपरेट क्लस्टर्स। तो इसका प्रॉब्लम है, सिंगल लिंकेज का प्रॉब्लम है चेनिंग इफेक्ट, प्रॉब्लम इज द चेनिंग इफेक्ट। और सिंगल लिंकेज में हमने जान लिया क्या, कि दो पॉइंट्स के बीच क्लोजेस्ट और मिनिमम डिस्टेंस को हम क्लस्टर का डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंप्लीट लिंकेज क्लस्टरिंग। इन कंप्लीट लिंकेज distance between two clusters is equal to maximum distance between two clusters। तो सिंगल लिंकेज में मिनिमम डिस्टेंस लिया था दो पॉइंट के बीच, आप कंप्लीट लिंकेज में हमने मैक्सिमम डिस्टेंस लिया दो पॉइंट के बीच, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही होगा, डीएफ बी इक्वल टू मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स ए क्लस्टर का है, वाई क्लस्टर वाई बी क्लस्टर का है, इन दोनों के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या किया, डिस्टेंस मान लिया दोनों क्लस्टर्स। अब इसमें क्या है, क्लस्टर्स मार्च ओनली इफ ऑल पॉइंट्स आर क्लोज। जब सारे पॉइंट्स क्लोज होगा तभी हम क्लस्टर को मार्च करेंगे। एंश्योर्स टाइट एंड कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स, ठीक है। इसमें चेनिंग फॉर्म नहीं होगा, इसमें टाइट एंड कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स फॉर्म होगा। एडवांटेज इसका रहेगा क्या, इट प्रोड्यूसेस वेल सेपरेटेड कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स, राइट। एग्जाम्पल, इवन इफ वन पॉइंट इज फार, क्लस्टर्स विल नॉट मार्च। अगर एक पॉइंट भी अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो क्लस्टर्स मार्च नहीं किया जाएगा। इसका विजुअल इंटेंशन देख सकते हो, जैसे क्लस्टर ए कॉम्पैक्ट ग्रुप, क्लस्टर बी, लाइक दैट। डिस्टेंस बिटवीन फारदेस्ट पॉइंट्स एंड प्रिवेंट्स अर्ली मार्जिंग, तो फारदेस्ट पॉइंट होने के कारण वो मार्च नहीं हो पाता। आप कंपेयर करते हैं, हम सिंगल लिंकेज में क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं, और कंप्लीट लिंकेज में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। सिंगल लिंकेज में आपका लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर, कंप्लीट लिंकेज में कॉम्पैक्ट क्लस्टर। सेंसिटिविटी टू नॉइस सिंगल लिंकेज में बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, और कंप्लीट लिंकेज में लो होता है। मार्जिंग बिहेवियर, अर्ली मार्जिंग, कंजर्वेटिव मार्जिंग, प्रॉब्लम चेनिंग इफेक्ट। एंड इसमें हो सकता है कंप्लीट लिंकेज में मे इग्नोर नेचुरल connection। Just let me show you the diagram again। So you can see here the diagram. This is the single linkage। दिखाई दे रहा है आपको, ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, क्लोजेस्ट पॉइंट ये रेड वाला, और यहाँ पे क्लस्टर बी में ये वाला ग्रीन वाला, सभी की नहीं मतलब जो क्लोजेस्ट है उसके थ्रू आपका क्या हो रहा है, मार्च हो रहा है। कंप्लीट लिंकेज में जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है ये वाला, और इसमें ये वाला था, तो उसके बेसिस में मार्च हो रहा है। सिंगल लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। और बाकी एवरेज वाला भी है, सेंट्रोइड लिंकेज भी है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। सेंट्रोइड में सेंट्रोइड वाला मतलब जो उसका सेंटर है उसको लेके चलते हैं मार्च करने के लिए, और एवरेज में एवरेज सिस्टम। बट ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल लिंकेज एंड आई होप इट इज क्लियर। Now let's come to the real life example. In single linkage, if we group social media user, one common friend can connect entire network, leads to very large mixed groups. Like, right? Complete linkage for product clustering, only very similar products are grouped, leads to clean and meaningful categories। ये बहुत important है, हाँ, ये मुझे लगता है important है। तो इसमें क्या होता है,
जो एकदम सिमिलर प्रोडक्ट्स है उनको ग्रुप किया जाता है, ये तो फिर क्लीन एंड मीनिंगफुल और कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स फॉर्म होता है। सिंगल लिंकेज connects clusters too early, while complete linkage is trickier and more precise. So we have seen that hierarchical clustering builds a tree-like structure of the cluster, right? And single linkage, as we have seen, it uses nearest points and can cause chaining, leading to long, unstructured clusters, while complete linkage uses farthest points, producing compact and well-separated clusters. Therefore, complete linkage is generally more suitable. तो पूछ सकते हैं एग्जाम्पल कौन सा ज्यादा आपका रिलायबल और स्टेबल है, तो आप बोल सकते हो complete linkage. While single linkage is more sensitive to noise. Let's come to the next question, that is outliers. DBP, D is a distance-based outlier detection method we use in data mining to identify unusual and abnormal data points. It is based on the idea that normal points lie close to many other points, correct? Okay? And outliers are far from the most data point. ये तो हम जानते हैं. इसका मीनिंग क्या है, ये देखते हैं. Meaning of DBP command. A point is considered an outlier if at least a fraction P of the total data points are at a distance greater than. क्या बोल रहा है? A point is considered as an outlier. अगर एक पॉइंट को हम आउटलायर कब मानेंगे, जब at least a fraction P of the total data points are at a distance greater than T. ये जो P है, proportion of the data set, this will like 0.1, 0.05, the distance threshold. Okay. So if a point has too few neighbors within distance D, तो क्या होगा? ये एक आउटलायर हो जाएगा. वो मतलब डिस्टेंस D से बाहर है, तो वो एक आउटलायर हो जाएगा. So core formula is like the point X is an outlier if number of points Y such that distance of X comma Y is less than number of points Y such that distance of X comma Y is less than equal to D, Y less than equal to 1 minus P to N. जो P है minimum fraction of the numbers required and N is the total number of methods. ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो एक पॉइंट को आउटलायर तब मान रहा है जब नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब वाई नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, एक्स कॉमा वाई का डिस्टेंस जो है डी से लेस देन इक्वल टू डी और is less than this d is less than 1 minus p minus into 1 minus p का मतलब क्या हो गया? मिनिमम फ्रैक्शन है. ठीक है, मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द नेबर्स रिक्वायर्ड into n, उससे कम हो रहा है. तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ डाटा नाइबर से भी कम हो रहा है, तो वो पॉइंट को हम आउटलायर बोलेंगे. जिसके नाइबर जितना थ्रेशोल्ड होना चाहिए उससे कम नाइबर से, तो ऑब्वियसली वो बहुत दूर में है, जिसके कारण हम उसको बोल सकते हैं कि दिस इज ए पॉइंट दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉइंट्स, राइट. So we draw a radius of distance d around a point. We count how many points lie inside the radius. If very few points are inside, then it is an outlier. Very simple concept. Small value of d, only very close neighbors are counted. Many novel points fail the condition, leads to false positive. तो close neighbors को count करते हैं. Many novel points इस कंडीशन को फेल कर सकते हैं, लीड फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है. फॉल्स पॉजिटिव, राइट. फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? एक्चुअली दैट इज नेगेटिव. Large value of d, even distant points are counted as neighbors. Outliers may appear normal, leads to misanomalies. Also means false negative. तो इससे क्या हो रहा है? आप ज्यादा स्मॉल या तो ज्यादा dB नहीं ले सकते. You have to take a balanced one. So say we are analyzing customer spending behavior. Most customers spend around 500 to 2,000. One customer spend say 50,000. Then say case one, small d, only very close spending
values are considered, many normal customers may appear unusual, right? So false alarms increases. So small dB nihilation, large dB, large say wide range is considered as normal. 50,000 customer may not be detected as outliers or missed. तो इसलिए हमें डी को चूज करना है बहुत केयरफुली. नॉर्मल रीजन दिस आउटलायर इज स्मॉल डी टू स्ट्रिक्ट मेनी फॉल्स अलर्ट हो जाएगा और लार्ज डी टू लूज मिसेस आउटलायर. So dBp, D depends heavily on the parameter spectrum. कैसे P को सिलेक्ट कर रहे हो, कैसे D को सिलेक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका परफॉर्मेंस, राइट. Incorrect D value affects accuracy of detection. Applications are like fraud detection, banking transaction, network intrusion detection, medical anomaly detection, industrial fault detection. So simple distance-based concept है ये. No need for level data. Works well in many practical scenarios. और limitation तो हमने देख ही लिया. ये parameters के ऊपर depend करता है. Very sensitive to the parameter D, right? Computationally expensive for large data set and poor performance in high dimension. ठीक है. तो हमने देखा कि DVPD is a distance-based method for detecting outliers, and it like based on means selecting these parameters very carefully, right? It checks how many points lie within a specified distance D, and the choice of D is very important. The small value leads to false positive, and large value may miss anomalies, right? And therefore proper parameter tuning is very essential for accurate outlier detection. तो इस मेथड का यही चीज है कि आपको ना मतलब P और D का वैल्यू, स्पेशली आपका P का वैल्यू एंड D का वैल्यू बहुत केयरफुली चूज करना पड़ेगा, राइट. तो इसका मैं एक इमेज दिखा देता हूँ आपको. Just a minute. Considering one that is anyway, ये आपको डीवीपीडी का है. ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको. ये पॉइंट है, ये आउटलायर इसके बाहर है. सिमिलरली नॉइस पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट ये हो गया, फ्लो पॉइंट ये हो गया. तो ये एल्गोरिथम है दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. के मीन्स कन्वर्जेंस. के मीन्स एल्गोरिथम तो हमने पढ़ लिया है, बट के मीन्स कन्वर्जेंस को अभी थोड़ा फिर से देखते हैं. K means we know that this is an unsupervised technique, right? And we used it to group the similar data points into clusters. One property is that it always converges, that is, stops after a finite number of steps. Now, what is convergence in K means? जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. Convergence means the algorithm stops sending cluster assignments and centroid after some time. The convergence means the algorithm stops sending cluster assignments and centroids. And at this point, clusters become stable and no further improvement is possible. Objective function इसका था xi minus mu k square, right? It always, this K-means algorithm always tries to minimize this objective function, xi minus mu k square. Xi is the data point, uk is the centroid of the cluster k, and xi minus mu k square is the square distance. And this WCSS is what? Is the sum of the squares distance of each point from its cluster centroid, right? Why K means always converge? ये क्वेश्चन हो सकता है कि K means क्यों हमेशा आपका converge करता है, right? Because it has K means has two repeating steps.
first assignment step, right? Each step, each point is assigned to the nearest centroid and this reduces WCSS. सारे पॉइंट को ये क्या करते हैं, हम नियरेस्ट जो सेंट्रॉइड है उसको असाइन करते हैं, इससे WCSS रिड्यूस होता है, राइट? एंड अपडेट से न्यू सेंट्रॉइड is calculated as mean of points and this is also reduces WCSS. तो असाइनमेंट स्टेप भी है और अपडेट स्टेप, दोनों में आपका जो ये स्क्वाड क्या बोलते हैं, सम ऑफ द स्क्वाड डिस्टेंस ऑफ इस पॉइंट फ्रॉम इस क्लस्टर सेंटर, ये जो है ये रिड्यूस हो रहा है। असाइनमेंट स्टेप में हर एक पॉइंट को हम क्लोजेस्ट सेंट्रोइड में असाइन करते हैं, इट ऑल्सो रिड्यूसेस WCSS एंड अपडेट में न्यू सेंट्रोइड इज कैलकुलेटेड एज द मीन ऑफ पॉइंट्स, that also reduces WCSS. So क्या हो रहा है, in every iteration WCSS either decreases or stays the same, but it will never increase. यही मेन पॉइंट है कि it will never increase, right? जिसके कारण क्या होता है, K means हमेशा कन्वर्ज होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, K मीन का दो रिपीटिंग स्टेप है। फर्स्ट असाइनमेंट स्टेप, हर एक पॉइंट को क्लोजेस्ट सेंट्रोइड में असाइन करते हैं जिसके कारण WCSS दैट इज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस इज फ्रॉम इस ऑफ इस पॉइंट फ्रॉम द क्लस्टर सेंट्रोइड, ये रिड्यूस होता है। सिमिलरली अपडेट करते हैं, मतलब हर एक बार में हम क्या करते हैं, उसके बाद इसका सेंट्रोइड को अपडेट करते हैं बाय टेकिंग द और बाय कैलकुलेटिंग द मीन एंड दैट आल्सो रिड्यूसेस WCSS, राइट? ये दोनों जो स्टेप चल रहा है, इन दोनों में स्टेप में हमने एक चीज नोटिस किया, WCSS हमेशा रिड्यूस होता है या तो सेम स्टेज द सेम, ये कभी इंक्रीज नहीं होता है। तो इसीलिए K मीन्स हमेशा कन्वर्ज होता है क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कभी भी हमेशा इसका रिड्यूस करते हैं हम लोग, या तो स्टेज सेम। तो each step improves clustering, the algorithm keeps getting better, eventually no better grouping is possible, so it stops automatically. Why it cannot run forever? Converse होगा तो obviously ये क्या होगा, it cannot run forever. Two reasons: finite possible cluster assignment, for n data points and a cluster only a finite number of partitions exist. WCSS decreases this time, since WCSS keeps decreasing, it cannot decrease forever, so algorithm must stop. Algorithm कभी भी हमें infinite time के लिए run नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि फाइनाइट पॉसिबल क्लस्टर असाइनमेंट करते हैं n डाटा पॉइंट्स के लिए K से, और WCSS हमेशा डिक्रीज होता है हर एक बार, ये कभी भी हमेशा के लिए तो डिक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है? सो एल्गोरिथम स्टॉप करेगा। सो सिंपल एग्जांपल लाइक इमेजिन ग्रुपिंग द स्टूडेंट्स बाय मार्क्स, फर्स्ट random grouping, step 2 adjust group based on the average mark, step 3 group becomes stable, no further improvements possible, means convergence reached. Visual intuitions are random cluster, reassign points, better cluster, update centroids even better, and no sense that is stop convergence. So important insight is that K means does not guarantee base clustering. It guarantees only converges to a local optimum. तो K means हमेशा ही बेस क्लस्टरिंग देगा, ये तो गारंटी नहीं कर सकता, बट गारंटी नहीं दे सकता, बट लोग ये कन्वर्ज करेगा, ये गारंटी दे सकते हैं। It always converges, right? It guarantees only converges to a local optima. Limitation ये है कि final result depends on initial centroid selection. It may converge to a different solution each time. Real life example में हम बोल सकते हैं first grouping is in customer segmentation, first grouping is random, then customers are refined step by step, eventually stable customers group are formed. K means always converge because of the within the cluster sum of the squares WCSS. Within cluster sum of clusters squares, within cluster sum of square always decreases or remains constant after every iteration, and there are only a finite number of possible cluster assignments, and the objective function to keep improving. The algorithm must eventually have a stop at the reasonable solution. So this local minimum. ठीक है, WCSS का फुल फॉर्म को याद रख लेना, विद इन क्लस्टर सम ऑफ द स्क्वायर्स। आप बोल सकते हो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच एक्चुअली कैलकुलेट्स सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम इट्स क्लस्टर सेंटर। तो K मींस क्यू कन्वर्जेंस होता है, ये हमने देख लिया। असाइनमेंट स्टेप, इसमें हर एक पॉइंट को नियरेस्ट सेंटर में असाइन करते हैं,
इससे WCSS reduce होते हैं. Then after that step, that is new centrality is calculated as the mean of points that also reduces. तो इसीलिए दोनों स्टेप में जैसे कि WCSS रिड्यूस या तो सेम रहता है तो कभी इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि K means clustering always converges. So I hope it is clear whatever I have discussed now. If you have any doubt, then you can ask me. But do remember that these are a very important topic that you cannot miss. Right? Specifically from Helen Kamber book, I suggest that you go through that book, very important. But I'm trying to include all the important topics here. Okay, that's all for today. Thank you.